So good morning all of you. So I'm going to start with the first concept, that is gross and net. Is it clear? Now when you say gross means total. Gross means total. Okay. When you say net means it's not total. Net means something is deducted. When you say net means something is deducted. Is it clear? Net. Alright. Now, gross means addition of everything. Okay. Gross means the total. Alright. Now, gross and net. Okay. Gross and net, heading right down, gross and net. Okay, gross and net are both. Okay, this you don't write, this I made you to understand. Okay, they both are differentiated. This you write, differentiated on the basis of depreciation cost. तो जब भी आपको ग्रॉस और नेट कंसेप्ट नेशनल इनकम एग्रीगेट से कैलकुलेट करना है तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. यू मस्ट हैव द क्लियरिटी about the concept of depreciation cost. Okay, what I have said, depreciation cost. Is it clear? Now first understand national income. You know that national income is calculated every year. Okay, every year national income is a current output. Whatever output present in the current financial year is a part of national income. Something which is produced before is not the part of national income. Okay, now for example हम लोग आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं किसकी हेल्प से? फैक्ट्री में क्या होती है? मशीन इंस्टॉल होती है, ठीक है, इक्विपमेंट्स इंस्टॉल होती है, फैक्ट्री इटसेल्फ. अब उसके लिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारे व्हीकल्स की यूज़ करते हैं, रोड्स की यूज़ करते हैं, ठीक है. अब इतनी सारी चीज़ों का यूज़ हो रहा है जो कि उसी ईयर में इंस्टॉल्ड नहीं होता है. मशीन, फैक्ट्रीज we build once and use it for a longer period of time. Okay, so the price of machine, the price of factories, the price of buildings is what? Original cost. Means original मतलब अगर मशीन को 2015 में इंस्टॉल किया 5 लाख की मशीन को, वही 5 लाख की मशीन 2016 में भी यूज होगी, 17 में भी यूज होगी, 18 में भी यूज होगी, 19 में भी यूज होगी, 20 में भी यूज होगी, 21, 22, the same machine. Now the question is that cost will be inclusive. The cost incurred on the machine. उस cost को किस सन में ऐड किया नेशनल इनकम के? 2015 में. Okay. Now अब वो मशीन जो 2015 में इंस्टॉल्ड हुई, that machine is going to operate throughout many years. But the question is that machine will operate without any problem? No. The machine may get damaged. Okay, then what the producer will do? The producer, suppose that machine got damaged in 2020 and producer has incurred suppose 20,000 rupees for the repairment of that machine. वो 20,000 रुपीज जो प्रोड्यूसर ने यूज की फॉर द वियर एंड टियर ऑफ मशीन, वियर एंड टियर ऑफ मशीन मीन्स फॉर द रिपेयरमेंट ऑफ मशीन, is called what cost? Depreciation cost.
हर एक फिक्स्ड कैपिटल, whether it's a factory or it's a machine or it's a equipment, they depreciate, the value depreciate, they get damaged, and producers incur the cost for the repairment of that damaged machine. Suppose in 2020 the machine is being repaired by using 20,000. That 20,000 is what cost? Depreciation cost. अब ये डेप्रिसिएशन कॉस्ट है उस मशीन का जो 2015 में इंस्टॉल हुई, बट इट इज अ पार्ट ऑफ करंट आउटपुट बिकॉज इट इज रिपेयर्ड इन 2020. So I hope you people have understood. So now the question is that 2,000 rupees along with other thing is added where and is not added where. So this depreciation cost, gross add depreciation cost, depreciation cost, ठीक है. ग्रॉस में जो भी नेशनल इनकम एग्रीगेट है, जो ग्रॉस कंसेप्ट है, जैसे जीएनपी, जीडीपी, जीएनपी एमपी, जीडीपी एमपी, जीएनपी एफसी, जीडीपी एफसी, सब ग्रॉस कंसेप्ट है. इन सारे नेशनल इनकम एग्रीगेट में क्या इंक्लूसिव है, क्या ऐड है? डेप्रिसिएशन कॉस्ट, बिकॉज ग्रॉस ऐड डेप्रिसिएशन कॉस्ट. ओके, ऐड और इंक्लूड डेप्रिसिएशन कॉस्ट. पहले you will make this arrow and then you will write this, what I told you, the gross concept and net concept of national income aggregate are differentiated on the basis of which cost? Depreciation cost. अब इस डेप्रिसिएशन कॉस्ट को मैंने कहा किस में इंक्लूड होगा? वो जो 20,000 रुपए मैंने बताए वो सारी किस में यूज होगी? सारे ग्रॉस कंसेप्ट नेशनल इनकम एग्रीगेट में. और जितने भी नेट कंसेप्ट नेशनल इनकम एग्रीगेट में, उसमें से क्या होगा? नेट डिडक्ट और exclude which cost? Depreciation cost. Depreciation cost. तो ये आपको याद रखना है. You have to remember. ठीक है, तो अब इससे हम लोग फॉर्मूला बना लेंगे. कैसे फॉर्मूला बनाएंगे? कोई भी नेशनल इनकम एग्रीगेट ले लो, GNP. Let me take the national income aggregate GNP. ठीक है? How we can change GNP into NNP? How we can change GNP into NNP? How? When? Then we'll get NNP. How we derive NNP? How we derive NNP from GNP? How we derive NNP from GNP? When? Then we'll derive what? GNP minus what? Depreciation cost. क्योंकि depreciation cost में क्या इंक्लूड होता है? सॉरी, ग्रॉस कंसेप्ट में क्या इंक्लूड होता है? डेप्रिसिएशन कॉस्ट. और नेट कंसेप्ट में क्या एक्सक्लूड होता है? डेप्रिसिएशन कॉस्ट. तो अगर आपको नेट निकालना है ग्रॉस से, तो आप ग्रॉस से क्या माइनस कर दोगे? डेप्रिसिएशन कॉस्ट. सिमिलरली, हाउ यू कैन डिराइव जीएनपी फ्रॉम एनएनपी? देन जीएनपी इज इक्वल टू एनएनपी प्लस व्हाट? डेप्रिसिएशन कॉस्ट. गेटिंग?
have taken two national income aggregates. One I have taken gross national product, one I have taken net national product. इसमें अनकॉमन फैक्टर क्या है? ग्रॉस एंड नेट. कॉमन फैक्टर क्या है? एनपी एनपी, दोनों कॉमन फैक्टर है. अनकॉमन है ग्रॉस और नेट. अगर सपोज क्वेश्चन आता है हाउ वी डिराइव जीएनपी फ्रॉम एनएनपी, हाउ वी डिराइव जीएनपी फ्रॉम एनएनपी, तो जीएनपी इज इक्वल टू एनएनपी प्लस क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन कॉस्ट. हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट में जब डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऐड कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. हाउ वी डिराइव एनएनपी फ्रॉम जीएनपी, कैसे डिराइव करेंगे? जब हम लोग जीएनपी से डेप्रिसिएशन कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? एनएनपी, क्योंकि जो ग्रॉस कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट्स होते हैं वो इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट होते हैं, और जो नेट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट्स होते हैं वो एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट होते हैं. या फिर तुम ऐसे बोलो, ग्रॉस कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट एंड डेप्रिसिएशन कॉस्ट, दैट्स व्हाई प्लस. अगर आपको ग्रॉस कंसेप्ट निकालना है तो आप प्लस डीसी करोगे, अगर आप नेट कंसेप्ट निकालोगे तो आप माइनस डीसी करोगे. ये आपको याद रखना पड़ेगा. इसीलिए मैंने बोला दैट ग्रॉस ऐड और इंक्लूड डेप्रिसिएशन कॉस्ट, नेट डिडक्ट और एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन कॉस्ट. एंड हाउ वी डिफरेंशिएट gross and net on the differentiate on the basis of depreciation cost. Is it clear? So on the basis of depreciation. So this is important. This is important. And this also is. So this is your first concept, then this, and then this. Is it clear? And then I have taken one national income aggregate, and then I have told you people that how we can calculate net from gross or how we can calculate gross from net. अगर हमको net निकालना है gross से तो हम लोग क्या करेंगे? gross से depreciation cost minus कर देंगे. अगर हमको gross निकालना है net से तो हम लोग net में क्या ऐड कर देंगे? Depreciation cost, and then we'll get gross concept. So this you people have to note down. Is it clear? Note down this, then I'll explain you the second one. Note down this. Now I'm going to explain you the second fact. What is the second fact? National product and domestic product. Is it clear? That is the second fact. National product and domestic product. Okay. National product, understand, and domestic product. First understand domestic. Whenever you say the domestic means something like, for example, in India we have three sectors: primary sector, tertiary sector, and then we have secondary sector, manufacturing sector. प्राइमरी सेक्टर फार्मर्स, इंडिया के फार्मर्स जहाँ पे भी रूरल एरियाज हैं वहाँ पे उन्होंने प्रोडक्शन की, प्लस इंडिया के अंदर जितने भी इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर प्रोडक्शन की, जितने भी सर्विस सेक्टर हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं विद इन इंडिया. इज इट क्लियर? सो समथिंग दोज प्रोडक्ट which are produced within the domestic territory, within the borderline of India. We know that a country has a border. India has a border. That is called the domestic territory. So whatever product which is produced within the domestic territory. Nowadays the economy is not a closed economy. It's an open economy. If I'll ask you, we have so many industries. If I'll ask you, tell me the Indian industries and tell me the foreign industries, तुम भी confused हो जाओगे. But in India, many companies are there, which are the foreign companies, foreign producers. What these producers have done? They have come to India. They have purchased a land in India. They have installed their factory in India, and they are producing the commodity within the domestic territory. Within the domestic territory. Is it clear? Now, नेशनल इनकम में हमने पढ़ा
कि नेशनल इनकम सिर्फ इंडियन रेसिडेंट्स की इनकम को ऐड करेगा, फॉरेनर्स की इनकम को ऐड नहीं करेगा। बट कोई ना कोई नेशनल इनकम एग्रीगेट चाहिए जहां पे हम लोग ये ऐड कर पाए कि कितना इनकम इंडियंस ने बाहर प्रोड्यूस किया, अर्न किया, और कितना इनकम फॉरेनर्स ने इंडिया में अर्न किया। क्योंकि बहुत सारे इंडियन producers go outside India and do the production and earns the income. Many outside foreign companies come to India and do the production in India and earns the income. Is it clear? So when you say national product, then what is the meaning of national? National word means, national here means residents. Nationals of India means residents of India. Residents. What is the limitation of national product? That the product must be produced by residents. And when you say domestic, then domestic means the product must be produced within domestic territory. Within domestic territory. This is something important and this is something important. So what is national product? National product means the money value of all final goods and services produced by the residents. Produced by who? By the residents. अब इंडियन सिटीजन सिर्फ इंडिया में नहीं प्रोड्यूस करते हैं, या इंडियन सिटीजन सिर्फ इंडिया में इनकम नहीं अर्न करते हैं. दे टेक अ वीजा, दे गो टू द फॉरेन कंट्रीज, they give their service in the foreign countries, but they are the citizen of India. So suppose an Indian went to America, an Indian went to Saudi Arabia, they are working there, they are earning income. That income is not going to be added in the national income of America or Saudi Arabia. That income is going to be added in the national income of India. That which national income aggregate? In the national product. तो नेशनल प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स ईदर इनसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया इज नेशनल प्रोडक्ट. मतलब नेशनल प्रोडक्ट वो इनकम भी ऐड करता है जो देश के बाहर कमाई गई हो, जो देश के बाहर कमाई गई हो. पर एक कंडीशन है कि वो कमाई गई इनकम सिर्फ इंडियन रेसिडेंट्स की होनी चाहिए, रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री की होनी चाहिए. बट इट इंक्लूड द इनकम विच इज अर्न आउटसाइड द कंट्री. बट व्हेन यू से डोमेस्टिक प्रोडक्ट, व्हाट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट? द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट. इंडिया के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी में हुंडई कंपनी इज देयर and Maruti company is there. Hyundai is a foreign company, Maruti is an Indian company, but both are producing the commodity. Maruti is a resident of India, Hyundai is a non-resident of India. But what is the common factor? That Hyundai and Maruti both are producing the commodity within the domestic territory. So here the limitation is only this, that income must be earned within the domestic territory. It may be earned by the residents or may be earned by the non-residents. Is it clear? So what is the meaning of domestic product? Domestic product means the money value of all final goods and services produced by the residents or by the non-residents, but operating within the domestic territory of a country in a year is called domestic product. तो इसके कंडीशन क्या है कि रेसिडेंट को ही प्रोड्यूस करना है. और कहाँ पे लिबर्टी है? लिबर्टी यह है कि वो चाहे इंडिया में प्रोड्यूस करे चाहे फॉरेन कंट्री में प्रोड्यूस करे. इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये जो प्रोडक्शन होगी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी होगी. कोई ज़रूरी नहीं है कि वो
इंडियंस के द्वारा प्रोड्यूस की गई या फिर फॉरेनर के द्वारा प्रोड्यूस की गई. इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द की लाइन हियर? कॉमन लाइन इज दिस, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. यहाँ पे भी उसके बाद चेंज होगा. फॉर नेशनल प्रोडक्ट, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय होम? Residents. Operating where? Operating either within the domestic territory or outside the domestic territory in a year is called what? National product. What is domestic product? The money value of all final goods and services produced by resident or non-resident but operating within the domestic territory of the country in a year is called what product? Domestic product. So I think concept you people have understood that what is domestic. तो कोई भी national income aggregate, अब national income aggregate उठा लो GDP. GDP में क्या ऐड है? National income aggregate GDP में क्या ऐड है? The money. What is the meaning of GDP? The money value. See, it is D and it is G. G भी मैंने बता दिया. G मतलब inclusive of depreciation cost. D मतलब produced by residents or non-resident within domestic. So what do you mean by GDP? Answer is clear. The money value of all final goods and services produced either by residents or by non-resident operating within the domestic territory inclusive of which cost? Gross hai. So inclusive of depreciation cost in a year is called what? GDP. What is the meaning of GNP? What is the meaning of GNP? यहाँ पे भी G है, यहाँ पे भी G है, तो यहाँ पे भी inclusive depreciation cost था, यहाँ पे भी inclusive depreciation cost. So what is GNP then? The money value of all final goods and services N है, मतलब only by the residents. The money value of all final goods and services produced by the residents operating either inside or outside the domestic territory inclusive of which cost? Depreciation cost in a year is called what? GNP. Is it clear to all of you? So you people have understood, I suppose, you have understood the meaning of national product and you have understood the meaning of domestic. So write down first the meaning of national product. Write down, give the first heading, give national product and domestic product. Don't write all this thing. This I have made you to understand. First write the meaning of national product. Write down the money value of all final goods and services produced by the residents of the country operating either inside or outside the domestic territory, operating either inside or outside the domestic territory of the country in a year is called national product. Full stop. Now write down the meaning of domestic product. The money value of all final goods and services produced by the residents or the non-residents operating only within the domestic territory of the country in a year is called domestic product. So you people have written the difference between both. Okay, you have written the meaning of national product and you have written the meaning of domestic product. Now, national product and domestic product. अब तो national product में क्या ऐड करते हो? वो भी इनकम जो बाहर से आ रहा है. डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या ऐड करते हो? वो इनकम जो फॉरेनर्स ने कमाया. ठीक है. सो अंडरस्टैंड, नेशनल द इनकम earned by foreigners in India. I'm taking the example of India. And income earned by Indians in foreign country. In foreign, दो कंसेप्ट लिखा मैंने यहाँ पे. पहला कंसेप्ट लिखा इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स इन इंडिया. जो भी फॉरेनर्स इंडिया में आए उन्होंने जो इनकम अर्न की उसको किस में ऐड किया है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट में. इनकम अर्न बाय इंडियंस इन फॉरेन कंट्री. जो भी इंडियंस बाहर गए उन्होंने जो इनकम अर्न की उसको किस में ऐड किया है? नेशनल प्रोडक्ट में. अब
How much income Indians have earned from foreign country? How do we know? When we subtract income earned by Indians from abroad minus income earned by foreigners, we will be able to get how much income Indians have earned from abroad. Is it clear? So, when you subtract income earned by Indians in foreign country minus income earned by foreigners in India, we will get NFIA. We will get NFIA. We will get NFIA. Is it clear? So I was explaining you people about NFIA, net factor income earned from abroad. कितना income बाहर से आया? Because you know what happened is when foreigners come to India, when they earn income in India, then their income is not going to be added in the national income of India. मतलब when foreigners are coming to India and they are earning and they are taking the income of India to their country. Similarly, Indians also goes to the foreign country and earns the income and they bring the income to India. How much income we got from foreign country? कितना income बाहर से India में आया? वो हम लोग को कैसे पता चलेगा? When we subtract income earned by foreigners in India from income earned by Indians in foreign country, then we will able to get what? Net factor income from abroad. What income Indians have earned abroad, that is included where? National product. Okay? And what income foreigners have earned in India have included where? In domestic product, because I told you what is domestic product? Income earned by resident or by non-resident. Is it clear? So meaning you people have written, now you need to understand the difference between NP and DP is the difference between NP, that is national product, and domestic product, and domestic DP is what? NFIA. Is NFIA. Is NFIA. Is it clear? तो इसका क्या मतलब है? जो इनकम बाहर से आ रहा है वो किस में ऐड है? NFIA is added in national product. So national product add NFIA. बाहर की इनकम कहाँ पे ऐड हो रही है? नेशनल प्रोडक्ट में. और कहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रही है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट. डोमेस्टिक प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट NFIA. Now, after writing the meaning of both, you have to make this chart. That national product and the domestic product, both are the differentiated on the basis of NFIA. And NFIA is added in national product, NFIA is subtracted from national product. Is it clear? So, I'll continue this tomorrow for the third one, that is market price and factor cost. Is it clear? Try to study gross and net concept, domestic and national concept. If you have any problem, because if you will not understand this, children, you will not able to understand the national income aggregate. So if you have any doubt in this, I'll make the video again. You can write, there is a comment section, there you can write and you can clear your doubts. And ma'am, this particular point, or ma'am, this is something which is, you can write a brief note and you clear your doubts. Is it clear? For today, this much. Thank you, children.